Therefore, this amendment is effective from financial year 23-24, that is assessment year 24-25 onwards. In simple language, if we say that this amendment would be applicable from the transaction to the transactions from 1st April 2023 onwards. Now let's move ahead with the provisions of this new clause H. Clause H to section 43B states that any sum payable by assessee to micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 shall be allowed only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid. In order to summarize this provision, it states that any sum which is payable by the assessee to micro or small enterprises beyond the time limit that is specified in the section 15 that we'll discuss later on in the presentation would be allowed as a deduction and to the extent it is actually paid. Therefore, if a particular expenditure is not paid at the end of the financial year, it will not be allowed as an expenditure while computing the income as per Income Tax Act. Now, if we go through this provision, the two basic question that arises in our mind is what is the meaning and how to categorize micro or small enterprises, and what is the time limit that is specified in section 15 of MSME Act. Before moving ahead with these two questions, I would first like to discuss why this clause is being considered as more strict and more stringent as compared to all the 7-8 clauses of section 43. The key difference between this clause and the other clause of section 43B is the application of provision to section 43B. As per the provision to section 43B, an expenditure would be allowed as deduction even if it is paid after the end of financial year, but before the due date, on or before the due date of filing of income tax return under section 139(1) of Income Tax Act. Thereby, even if the expenditure that is not paid at the end of the financial year, if it is paid before filing of the income tax return, it would be allowed. But this particular provision is not applicable in case of clause H to section 43B, thereby making it more stringent and more harsh on the taxpayers. Now let us go through the two questions that we were discussing while going through the provisions of clause H. Now here comes the interplay of MSME Act, because the questions that we are going to be discussing are defined or are as per the provisions of MSME Act 2006. Before moving ahead with how to categorize an enterprise into a micro enterprise or a small enterprise and what will be the time limits as per section 15, we would first discuss what is the meaning of an enterprise. As per clause E to section 2 of MSME Act, an enterprise has been defined. An enterprise means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called, engaged in manufacture or production of goods or engaged in providing or rendering any services. Thereby, from the definition of enterprise, it is clear that any enterprise would be further classified into a micro or a small enterprise if it is engaged in the manufacture or production of goods or engaged in providing or rendering of services. This definition of enterprise would be further used in clarifying the various doubts that we'll further discuss in the critical issues. Now, moving ahead with how to categorize an enterprise into the criteria of micro enterprise or small enterprise. The MSME Act has given twin conditions that an enterprise needs to fulfill simultaneously in order to fall into the category of micro or a small enterprise. The criteria is based upon investment in plant and machinery and annual turnover. And it is important to mention that both of the condition needs to be fulfilled in order to fall into each of the categories.
Now, in case of micro enterprises, the investment in plant and machinery shall not exceed 1 crore rupees, and the annual turnover does not exceed 5 crore rupees. In case of an enterprise to fall under the category of small enterprises, the investment in plant and machinery exceeds 1 crore rupees, but it does not exceed 10 crores, and the annual turnover does not exceed 50 crores. Now, it is important to discuss whether a taxpayer need to verify these thresholds in order to check whether an enterprise falls under the category of micro or small enterprise. We are not talking about entities whose financials are available to the public. We are talking about micro and small enterprises, probably proprietorships, partnerships, or HUFs, whose financial statements are not available to the general public. So it is not feasible for any taxpayer to verify these thresholds. Therefore, in order to verify whether an enterprise or my vendor or my supplier falls under the category of micro or small enterprise, a taxpayer, I being a taxpayer, have to check how I have to check. As per the MSME Act, there is a provision that any person, any enterprise who is required to be registered under the Act needs to have an Udyam registration number and an Udyam registration certificate. So for a taxpayer to identify whether their vendors or whether their suppliers fall under the category of micro or small enterprises, they need to obtain a copy of their certificate. Now, how the certificate looks and what are the various things that are mentioned in the certificates, I have attached a, a dummy certificate and how the certificate is issued to the vendors. In the beginning of the certificate, it is mentioned what is the type of establishment, what is the type of enterprise. That is, in our case, it is a micro enterprise and it is engaged in manufacturing. As a taxpayer, I need to my responsibility is to obtain this copy of the certificate and obtain a confirmation from the vendor. Now, moving ahead, since we have discussed how a particular vendor or how a particular supplier will fall under the category of micro or small enterprise. Now, it is important to discuss what is the time frame that the clause H to section 43 is talking about. The time frame or the time limit is being defined as per section 15 of MSME Act. The section 15 states that where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing. It is important to note, it is specifically written that the agreement shall be in writing. Or in case where there is no agreement, the payment shall be made before the appointed date. Now, before we discuss what is the meaning of appointed date, let us read the proviso to section 50, which is very important. Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance. Now, it is important. The key takeaways from this section 15 is the agreement needs to be in writing. And in case there is no agreement in writing, the payment needs to be done on or before appointed date. And in any case, even if the agreement in writing states that the credit period is more than 45 days, that will not be considered. That is maximum credit period that is allowable as per section 15 is 45 days. Now let us understand what is the meaning of appointed date that is mentioned in section 15. Section 2 of MSME Act states that appointed date means the day following immediately after the expiry of period of 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or services by the buyer from supplier. Now, there multiple times the section 15 and also section 2 has talked about
day of acceptance and day of deemed acceptance. Now let us go through what is the meaning of this day of acceptance or day of deemed acceptance. Day of acceptance is the day of actual delivery of goods or rendering of services. That is when the goods are actually delivered or when the services are actually rendered to the buyer. In case where the objection is made in writing, then the day of acceptance would be within 15 days. Then the day of acceptance would be 15 days from the date which on the date which the objection has been removed by the supplier. Now, where there is no objection made in writing by the buyer regarding the acceptance of goods or services, then the day of deemed acceptance would be within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services. Now, let us understand the provisions or time limits of section 15 with the chart, with the help of a chart. Now, the first question that arises is whether the credit period has been agreed in writing. If the credit period has not been agreed in writing, then the time limit for payment, then the maximum credit limit that is allowable is 15 days. In case where the agreement is in writing and the agreed time period is less than or equal to 45 days, then the credit period would be the agreed time period. In case where the agreed period is greater than 45 days, then the maximum time limit allowed is 45 days. Now, I have prepared a few illustration in order to analyze the combined provisions of section 43BH and section 15. Let us go through those illustrations. Now, let us assume in first case, the day of acceptance of supply, either in case of goods or in services, is 1st March 2024. And the credit period in writing has been agreed as 60 days. Now, here comes the section 15, which states that maximum time period allowable would be 45 days. So the due date as per section 15 would come to 15th April 2024. Now, in our case, let us assume the actual date of payment is 10th April 2024. Now, in order to check whether a particular sum would be disallowed under section 43BH, the first question that we need to ask is whether a particular sum was outstanding as on 31st March 2024 or not. If the question in our case, the answer to this question is yes. The second question comes is whether the sum has been paid within the time limit specified in section 15. In our case, the time limit specified is 15th April 2024, and actually the payment has been done before that. Therefore, there will be no disallowance under section 43BH in the assessment year 2024-25. Now, in next case, let us presume that the day of acceptance is 1st March 2024 and agreed time period is also 60 days. But maximum allowable would be 45 days. Due date as per section 15 would be 15th of April 2024. Now, in this case, if the buyer has made the actual payment on 20th April 2024, now what would be the consequences in our case? The first question would be whether this amount was outstanding as on 31st March 2024. The answer to the question is yes. The second question that comes is whether the amount is paid within the due date that is specified in the section 15. The answer to this question in this case is no. Hence, this amount would be disallowed under section 43BH in the assessment year 24-25. Now, it is important to note that this disallowance is not of permanent nature. When this amount in the next year, if this amount is paid by the assessee, it will be allowed as deduction. In next case, the date of acceptance of supply is 1st March 2024. The credit period agreed upon is 60 days. But in this case, the agreement is not in writing. Hence, the maximum credit period that is allowed under section 15 would be 15 days. The due date as per section 15 would come to 16th March 2024.
Now let us assume the assessee has paid the made the payment on 10th April 2024. Now the answer to the first question, that is whether the sum was outstanding as on 31st March 2024, the answer is yes. And the assessee has paid the amount after the due date of Section 15. Hence, this amount would be disallowed under Section 43BH in the assessment year 24-25. Now let's move ahead to the last case in which the date of acceptance of supply is 1st February 2024. The agreed time period in writing is 30 days. Hence, the credit period as per Section 15 would be 30 days. The due date as per Section 15 would be 2nd March 2024. Now, let us assume in this case, the actual date of payment is 29th March 2024. So the first question is whether this amount was outstanding as on 31st March 2024. The answer to the question is no. So there is no further question whether this amount would be disallowed in assessment year 24-25, as this amount would be allowed as an expenditure. Now we have discussed the provisions of Section 43B Clause H and what are the various interconnections and interplays of MSME Act in the application of this particular clause. Now let's move ahead with the various critical issues or practical points that we as a consultants are frequently getting from our clients. The first question, that is the most frequently asked question, is does the provisions of this clause applies to sum payable to traders? Earlier, the traders were not allowed to be registered under MSME Act, but the government received a lot of representations from the traders to incorporate them in the provisions of MSME Act and enable them to get themselves registered in the MSME Act. As we all are aware that the provisions of MSME Act provides a lot of benefits to the micro, small, and medium enterprises. Therefore, the various representations were made, and the government, through their official memorandum dated 2nd July 2021, allowed the traders to get themselves registered in the MSME Act. Therefore, the traders will have Udyam registration. But in the official memorandum itself, it was clearly mentioned that the benefit to the traders is only restricted to priority sector lending. That is, any other benefit that is there in the MSME Act would not be allowed to the traders. So, by taking inference from the official memorandum, it is therefore concluded that the traders does not fall under the ambit of Section 43B Clause H. Therefore, any payments that are made to the traders can be made in the normal course or normal payment terms that are there between the trader and the buyer of the goods or services. Now, the next question is whether the amount which is outstanding as on 31st March 2023, which remained outstanding as on 31st March 2024, also falls under the ambit of Section 43BH. That is, for example, if a particular sum was outstanding to be paid to a micro or a small enterprise at the end of the previous financial year, that is 31st March 2023, and it remained outstanding as on 31st March 2024. Whether that sum would be disallowed under Section 43BH. As we have discussed in the beginning of the presentation, that this amendment is applicable from 1st April 2023 onwards to the transactions that are in the financial year 23-24 onwards. Therefore, any sum which is outstanding in the beginning of the year would not fall under the ambit of disallowance under Section 43BH.
I am actually seeing the chat. I would request all the members that I will address all the questions that they have in the end of the presentation. मैम आप कोई नो इशू, आप डेलीब्रेशन अपनी कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स एंड में ले लेंगे. Yes, sir. So the next question is, does the agreement referred to in provisions of Section 15 of MSME Act specify whether it should be in writing form or oral? As we've already discussed while discussing the provisions of Section 15, that it clearly states that any agreement that the buyer or the supplier has, it needs to be in writing. No oral agreement or mutual consent would be considered as a valid agreement as per Section 15 of MSME Act. The next question is, does this section exclusively apply to assessee undergoing audit as per Section 44AB of Income Tax Act? The answer to this question lies with the provisions of Section 43B itself, which the provisions of Section 43B itself are applicable to all the assessees, irrespective of the fact that whether they are getting their books audited under Section 44AB or not. Therefore, taking the same inference, the provisions of clause H would also be applicable on all the assessees, irrespective whether they are required to get their books audited under Section 44AB or no. The next question is, do the provisions also extend to taxpayers who choose presumptive income determination under Section 44AD or 44ADA of Income Tax Act? A general view is taken that since the provisions of 44AD states that anything contrary contained in Section 28 to 43C, it is assumed that the provisions of 43B, 43BH would not be applicable in case where the assessee has opted presumptive taxation, presumptive income determination under Section 44AD or 44ADA or any other presumptive taxation scheme. Though this point is debatable, as there are few judgments where the assessing officer has disallowed expenditure which is not paid as per Section 43B, but a general view can be taken that the provisions of Section 43BH would not be applicable in case of presumptive taxation. The next question is, is it the responsibility of the concerned assessee to verify the threshold specified in the provisions of MSME Act to ascertain whether their vendor status is micro or small? As we've already discussed this, that it is neither feasible nor practicable for any assessee to verify the threshold limits. Thus, the responsibility of a taxpayer or an assessee is to secure a Udyam registration, copy of Udyam registration certificate from their vendors. And in case, even if a particular supplier of service or goods meets the criteria of the thresholds defined as per MSME Act, if it does not have a Udyam registration certificate, it will be assumed that they are not registered in the MSME category, and the provisions of Section 43B clause H would not apply to those assessees. Now the next question is, if a sum is disallowed in under another provision of Income Tax Act, will the same amount face a double disallowance if it falls under the purview of Section 43BH? Say, for example, if a taxpayer fails to deduct TDS under Section 194Q on purchase of goods, the same would be 30% of that expenditure would be disallowed under Section 40IA of Income Tax Act. Now, let's say the same amount falls under the ambit of clause H, that is the goods were purchased from a micro or a small vendor. Whether I am supposed to disallow the same expenditure under Section 43B as clause H as well? The answer to this question is no. Since under Section 43B clause H,
whole of the expenditure would be disallowed. There is no need to again disallow the expenditure in any other provision. Though, if the assessee is required to file Form 3CD, it is important to note that all the relevant clauses needs to be filled, that the information needs to be given in all the clauses, but but the disallowance will be done in one section. The next question is, if an assessee has multiple transactions with micro small enterprises, do the provisions of section 43BH apply cumulatively or individually? Uh, the provisions of this section applies transaction wise. That is, transaction wise, we have to individually check what is the due date of payment of the particular transaction, and it does not apply cumulatively to all the transactions. We have to verify on an individual basis what is the time limit for a particular payment of a particular invoice. Also, it is important to mention that in case where multiple accounts of same vendor are opened by this SC in the books of accounts, sum payable would be considered on aggregate basis. Now, the next question is whether the sum payable to micro small enterprise for acquisition of capital goods or capital services fall under section 43BH of Income Tax Act. The answer to this question is in case of purchase of capital goods or capital services, the assessee is not claiming expenditure the assessee is not claiming expenditure. Therefore, there will be no question of disallowing the same. So, in the same context, purchase of capital goods or capital services does not fall under the disallowance of section 43BH. Now, the next important question is, should the amount subject to disallowance be based on invoice value or taxable value? In other words, does the disallowance under section 43BH extend to goods and services tax? If we read the provisions of clause H to section 43B, in the beginning it is mentioned any sum payable to micro or small enterprise would be allowed as a deduction only on payment basis. Thus, from the beginning, we can understand that the intention is to disallow all the amount, whole of the amount that is payable to micro or small enterprise. Thus, the invoice value will be disallowed, not the taxable value. Now, as we all are aware, in case of works contract, there is a common term, retention money, that a particular percentage of contract value is retained in case of works contract, or it can happen in any kind of contract. So whether that retention money would be disallowed as per section 43BH, the answer to this question is, even if the retention money has been agreed upon between the buyer and the supplier, but the assessee is claiming the whole amount as an expenditure. The assessee is not deducting the retention money from the expenditure that is being claimed in the financial year. Therefore, it is assumed that even if the particular sum is being held as retention money, it will be disallowed. Now, moving ahead, I would like to discuss what are the various steps that we need to take in order to avoid disallowance under this section, and what are the various steps we can advise the taxpayers moving ahead. The first important step is to obtain vendor confirmations. We should advise to all the taxpayers that they should obtain a copy of registration from their vendors in case they are registered under the MSME Act, and in case if they are not registered under the MSME Act, take a confirmation from them. Also,
if we have the Udyam registration number of a particular vendor, we can go to the MSME Udyam portal and check whether they are just in what category they are registered, and whether they are a manufacturer or a trader or a service provider. The second important step is to document the credit period. As we've already discussed again and again, that this section clearly states that if the agreed time upon agreed time period is not in writing, it will not be considered, and only 15 days would be allowed as the credit period in case where there is no written agreement. Therefore, it is important to advise that all the taxpayers should have agreed a written agreement with their suppliers. The next important point is monitor the outstanding balances. That individually we should monitor the balances that are payable to micro or small vendors, and take the reminders for the same, so that the same is not disallowed under the provisions of Section 43BH. For a reference, we have prepared a dummy confirmation certificate that we can obtain from our vendors. We have it is advisable that it is on the letterhead of the enterprise and duly authorized or signed by the person who is authorized on the behalf of the enterprise. We have asked two basic questions. First is to confirm whether they are registered as a micro enterprise or a small enterprise or a medium enterprise, or whether they are a trader, manufacturer, or trader come manufacturer. And the last is, if the provisions of MSME Act are not applicable, then confirm the same. So, in the view of the discussion, we understand the intention of the government, that is to support the SME industry, and which is very commendable. But the whether this amendment would actually give them practical benefits, that is very questionable, because as we can understand that this amendment will disrupt the payment cycle that is there in the industry, because the provisions of this section is overriding the contract that the buyer and supplier has. Therefore, it will disrupt the payment cycle in the industry. And in future, probably the buyers would hesitate to purchase goods or services from the small or micro enterprises. And there will be a time where we'll see that these micro and small enterprises are voluntarily surrendering their certificates. So whether this will actually benefit them or not, that is a question that only time will tell. Thank you so much, sir. Now we can, if we have any questions, we can take those questions. कुछ क्वेरीज मेरे पास पहले आ रखी हैं, वो वन बाय वन ले लेता हूँ, फिर जो चैट बॉक्स में है या मेंबर ने रेज करनी है, पर वो क्वेरी डिस्कस कर लेंगे, राइट? Yes, sir. कल मैडम देख लो। हाँ, पहली क्वेरी में जैसे आपने बताया फिक्स्ड एसेट के बारे में, कि फिक्स्ड एसेट्स अगर आपने परचेज करी हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। Yes, sir. तो उसमें कोई, जैसे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं फर्स्ट ईयर 15 प्लस 20 एडिशन 35 भी हो सकता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो Yes, क्या sir. उस पर इफेक्ट पड़ेगा उसका परचेज का? Sir, depreciation is an allowance. It is not a deduction. Therefore, I don't think so. There will be an implication upon disallowing the depreciation. दैट मींस अगर कैपिटल आइटम परचेज करिए तो उसकी पेबल खड़ा भी है तो उसको नीड नॉट Yes. चेक होगा। Yes, sir. I will just take a second here, because I think in 48(3) also this issue has arisen, that where you make, earlier you used to make payment in cash exceeding a particular amount, because for capital expenditure 48(3) was not applicable. So the question was whether depreciation should be disallowed or not. I think whatever Jasmine just said now, that it is not it is just a disallowance. It is a notional disallowance, so that will not be applicable. Okay. Right, sir. So then, second question, ma'am. Yes, sir. Regarding section 44AD and 44ADA. Yes, sir.
lot of queries are there about section 44AD and 44ADA. One more thing I want to bring it in knowledge, the initial wording of 43B. 43B starts with the notwithstanding anything contained in any other provision of this act. Yes, sir. Sir, as I've already mentioned that this point is litigative or debatable because there are judgments to both the ends where there are judgments where the assessing officer has disallowed expenditure as per the provisions of section 43B, but in general case, I have taken a view that these provisions would not be applicable in case of presumptive. मैम आप अनम्यूट कर लेना, मैंने म्यूट कर दिया एक बार, है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट मैम, ये क्लियर हो गया. Then next question is in relation to checks issued. Yes, sir. For example, a party purchased on 1st of March 2024, Yes, and sir. on 30th of March, that party has valid agreement, written agreement, right? Yes. Then that means 45 days time that parties have. Yes, And on sir. 31st of March, that party issued a check of the equivalent amount, which is lying in checks issued but not present at 31st March 2024. And Yes, that sir. check cleared in the month of June because of 90 days validity of check. Okay. Will that be considered disallowance or not? Because total time available with the party is 30 days plus 90 days, 120 days. Yes, sir. Yes, sir. We are also getting a lot of questions regarding check issued. The answer to this question is at the end of the year, if we have issued the check and the supplier has not presented those checks to the bank, whether that amount would be allowed as an expenditure or it would be disallowed if it is not cleared within the time. In that case, I think the solution to that answer is that we should obtain a receiving of the check from the supplier that we have given you, that we have made you the payment, because to present the check within the time, that is solely dependent upon the supplier. That is not my concern whether they have presented the check or not. To prove that I have made the payment, I should obtain a receiving in writing from the other party. In case where any question arises on me, I have a proof for that. As a receiving copy account would be sufficient? Yes, sir. Okay. That means 30 days plus 90 days we can consider if a check issued Yes, lying sir. in my books and checks in hand lying in the books of recipient. Provided I have a receiving from the supplier. Definitely. May I just intervene for a moment? Definitely, sir, definitely. You see, if theoretically we see this is a valid thing, that if you obtain a receipt from the supplier that I have handed over the check within the stipulated time, naturally the responsibility is his. But it will depend. If suppose this is a sort of practice, I issue 100 checks on the last day and all are presented in the month of June, and I don't have sufficient balance in my bank account to meet those the clearing of those checks, then some intelligent officer can come up with this idea that it is all a sham transaction. So in these days of and this so much of artificial intelligence the department uses, so we as a advice to our clients, I will say that it should be used only sparingly, not as a habit. Okay. But sir, एक साइड से तो advice we can what I would like to say, कुछ तो advice client को on this ground करना ही पड़ेगा कि checks issued or checks in hand should be considered or not. But sir, नहीं उसके लिए first leg of the this issue, उसके लिए पहले तो वही है कि अगर आपने receipt ले ली, if you have obtained the receipt, qua us, I have made the payment. Right. There is no dispute. Okay. Right, sir. Next question. Chat box, there is one query in case of traders. Yes, sir. Vipanji raised a query in case a trader earns significant amount of commission as well, whether Yes, sir. covered or not.
Sir, the answer to this question, if they are registered as a trader, they will not be considered. If they are registered as a service provider, they will be considered. It depends upon in what category they are registered. For traders, there are three specific codes: 45, 46, and 47. If they are registered under these three clauses, they are considered to be traders as per the official memorandum. And if they are registered in any other codes, then they will be considered as manufacturer or service provider. Hence, they will be falling under the ambit of Section 43BH. Okay, but in case I bought material from a trader, as a Sorry, sir, trading your activity, voice is not audible. just a moment. मैम मेरा अनम्यूट बहुत कर लेना जी। डिस्टर्ब मैम आप अनम्यूट कर लीजिए काइंडली, हाँ मैंने वो जी। डिस्टर्बेंस आई थी इसलिए म्यूट कर दिया सबको। ठीक है सर, हाँ जी। मैं in case of traders, for example, I being a manufacturer bought some material from a trader Okay. as a trading item, but Okay. that trader, he himself listed him a trader as well as service provider. Will only registration as a service provider be impact my purchase or not? Will I be Sir, liable to pay within 45 days or 15 days? sir, whether the person is the enterprise is registered as a trader or a service provider. A trader, but there is an option trader and service provider. I think so. There is an option. If Sir, that in my person knowledge, the only three codes that are exempted and specifically mentioned in the official memorandum are 45, 46, and 47. Okay. And if under those codes, if an enterprise is registered, then only they will be considered as trader and exempted from the ambit of Section 43BH. All the other codes are covered under the ambit of 43BH. Okay, you mean to say if I have registration in 45, 46, 47, Yes, then sir. will not be applicable. Yes, sir. Okay, right. In chat box, a lot of queries in relation to traders only. One query is from Harman Singh. He raised a query whether clause H of section 43 is applicable on provisions, for example, audit fees payable, rent payable, etc., to MSME enterprise. Sir, accruals or provisions, if we talk about them, in that case, the goods are not actually delivered or the services are not actually rendered. In order to, by that I mean the sum is not payable to the supplier. Therefore, if the sum is not payable, the provisions of this clause would not be applied on them. Okay. I mean, in case that supplier changed his status from MSME, from my manufacturer service provider to trader during the year, Yes, sir. to which status as on which date should we consider? As a closing of the year, during the year, or beginning of the year? No, sir. In case where for suppose let's suppose for 6 months he was registered as a manufacturer and the remaining 6 months he's registered as a trader, then for the 6 months period he was registered as a manufacturer, then the provisions of section 43BH would be applicable. For the remaining transaction in the remaining 6 months, the provisions will not be applicable. So if the supplier has changed the status, we need to take the revised certificate from them. Okay, right. Also, sir, to mention, in case where an enterprise is getting registered in the mid of the year, then the provisions of the section would be applicable or effective from the date they get registered. Okay, right. Queries. Hitesh ji, I have a query. Yes, please. Yes, Yogesh ji, please. Sir, ma'am, you had told that this provision relates to the transactions done in financial year 23-24. My query is, I have 20 lakh due as on 31st March 2023. I Yes, had sir. bought goods worth 30 lakh during the year. I had made payment of 35 lakh only. Okay. Now, how would I adjust? 30 lakh this year first, or 20 lakh previous balance, 15 lakh this year and 15 lakh disallowed? So
industry practice is there that we'll consider it on FIFO basis. The Yeah, payments is okay. always considered on FIFO basis. So we'll first adjust the outstanding balance of previous year, and then we'll go ahead with the transactions of current year. It means 20 lakh opening balance, Yes, then sir. 15 lakh from current year, and the current year 15 lakh is pending, so it would be disallowed. Disallowed amount Yes. would be 15 lakh only. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. Another query raised by Jagjeet ji. What if client does not provide supplier category at the time of audit? What if the What if Sorry, sir? client does not provide suppliers category at the time of audit? Okay, in case where we cannot get a confirmation, sir, we have to send the confirmations and we have to ask them. And if we don't get, we'll obviously presume that they do not fall under the category of micro and small. Obviously, if we have to prove later on, we'll have a valid. We can prove that we have sent and asked for the confirmation, but the same has not been provided. In case we have the Udyam registration of them, we can check on the portal. But in case we do not have that information as well, then we have to presume that they are not under the category of micro or small enterprise. Okay. Next question is by CS Puneet Bhatia ji. What will be the disallowed amount if we have purchased material of rupees 1.18 crore, 1.18 crore, and Okay. we paid 1 crore but not paid 18 lakh at the end of the year? Then how much will be disallowed? So the amount that is not paid, 18 lakhs. Actually, he meant to say 1 crore 18 lakh total amount which of material which I purchased from him. Basic taxable value of 1 crore I paid, and 18 lakh of taxes I did not pay at the end of the year. I have already discussed in critical issues that the total amount would be disallowed. Whatever is not paid would be disallowed. It doesn't matter whether it is amount of GST or whether it is amount of taxable value. Okay, right. A query from CA Vivek Goyal: whether credit period mentioned on the invoice is a valid written agreement? Yes, sir. We are also advising the clients in case they do not have a valid, they do not have an agreement, because there is nothing called a valid agreement, or how the agreements need to be made is anywhere mentioned in the act. Therefore, if the invoice itself mentioned the credit period, that will be considered as a valid agreement. Okay. My last query is interest payable. Yes, Covered sir. as per this provision or not? Interest Sir, payable under both the condition. Interest payable on unsecured loans and interest payable on late payment charges. Sir, as per my understanding, the section mentions any sum payable. So I think it will be covered under the ambit of section 43BH. Both type of interest? Sir, the delayed payment interest that is there as per section 23 of MSME Act would not be there, because that is already disallowed as an expenditure in Income Tax Act. Okay. Right. Smeet Chitkara ji raised his hand. Kindly ask your query and unmute yourself and ask your query. Chitkara ji. Yes, Deshi. Actually, I will query that if one of my client is doing 90% trading and 10% manufacturing, and Okay. that unit is registered under the manufacturing only, where Okay. that unit is covered as a manufacturer or a trader. Sir, if they are registered as a manufacturer, they will be considered as a manufacturer. Okay. It all depends Yes. on the certificate. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Thank you very much. Thank you. Nice presentation by you. Thank you so much, sir. Last query in the chat box is from Mr. Dhanminder Singh. He raised his query: what if a person is actually a trader but has taken certificate as manufacturer? Sir, the Udyam portal is linked with the income PAN and GST. So it gets updated also. So if a person has wrongly obtained any categorization, that is onto the supplier, that penalty is onto the supplier. If they are providing me with the certificate of them as registered as a manufacturer, I have to change कपड़े ना बस ठीक Right, man.
all the queries have been answered, which are raised in the chat box. Now I request all the any member, if any query, he can unmute himself and raise his query. Any member can raise any member can raise hand, or any member can unmute himself for his query. हितेश जी, Yes, sir. नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरी इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे कि जो मान लीजिए मैं बायर हूँ, मैंने हाँ जी। पेमेंट करनी है हाँ जी। और आप एमएसएमई में हो, आपसे मैं परचेज कर रहा हूँ। राइट जी। मैं आपको कहता हूँ हितेश जी, मैं आपसे आगे परचेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है। मैं उस एंटिटी से परचेज करूंगा जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है जी। राइट। अब आप कहते हो जिंदल जी ऐसा है कि मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना मैं माइक्रो हूं ना मैं स्मॉल हूं, ठीक है जी। तो क्या वो आपकी अंडरटेकिंग मेरे लिए एक्सेप्टेबल है एज पर इनकम टैक्स? क्या मैं आपकी उस अंडरटेकिंग के बेस पे अपनी फाइल में लगा के क्या इस प्रोविजन से बाहर हो जाता हूं? हाँ जी मैडम। सर इन दैट केस अगर मुझे कोई लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है, अपने लेटर हेड पे लिख के दे रहा है दैट दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर माइक्रो और स्मॉल enterprise, what else I can do? I can if I don't have the registration number, I cannot verify that. Maybe in times to come, the portal, the number would be linked with PAN, but right now it is not available that I can check through PAN or GST number whether they are micro or small enterprise. मैंने कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी सिस्टम ने हमें ऐसा कोई नहीं दिया है कि जहां से हम वेरीफाई कर पाए। Yes, और sir. लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हितेश जी माइक्रो या स्मॉल में आते हैं, और साथ ही दूसरा डॉक्यूमेंट ये भी है कि वो लिख के देते हैं कि जिंदल जी मैं इसमें नहीं आता हूं। Yes, sir. तो क्या मैं जो अंडरटेकिंग वो दे रहे हैं उसके बेसिस पे मैं मान सकता हूं कि ये प्रोविजन में फॉल नहीं करते? Yes, sir. Because we don't have any other option, any other option. सर एक इसमें ये भी है ना, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है जनरल कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, है ना, बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अपने लेटर हेड पे अंडर माई स्टैम्प एंड साइन कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जी तो आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन और एक रिटन डॉक्यूमेंट में तो डिफरेंट रहेगा ही ना, डिफरेंस। नहीं सर, उसमें मेरा मेरा इशू इसलिए है कि जनरली क्या होता है कि जो गलत इंफॉर्मेशन फाइल करके भी माइक्रो स्मॉल में जा रहे हैं, जैसे ट्रेडर है वो सर्विस में जाके रजिस्टर करा लेता, हो जाता है जी। हाँ जी। तो पब्लिक डोमेन में तो सर इंफॉर्मेशन ये है कि जी वो माइक्रो में फॉल कर रहा है या स्मॉल में फॉल कर रहा है, एक्चुअली वो ट्रेडर है, तो मैं जी किसको मैं अप्लाई रिप्लाई। करूं? हेलो। हेलो। यस सर, हेलो। हाँ जी। हाँ हितेश जी, हाँ जी। हाँ भाजन जी। बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जय हिंद हाँ सर। नमस्कार सर, ऐसा है, हाँ जी। आप जो कह रहे हो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन का बेस क्या है? इंफॉर्मेशन का बेस तो जो उसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया वो हो सकता है, जी या उसने जो पिक्चर दिया वो हो सकता है। जी आप अपनी मर्जी से उसकी बैलेंस शीट देख ली आपने, जी अब वो जो बैलेंस शीट देखी वो अनऑफिशियली है आपके पास, जी आप उसके ऊपर रिलाई करोगे, या जो वो लिख कर दे रहा है, डेक्लेरेशन दे रहा है दैट आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएस, जी तो उसके बाद आपकी जिम्मेवारी, अगर आप देखोगे उसने सर्टिफिकेट गलत दिया, उसके ऊपर भी अगर शक करोगे आप, तो वो शक करना शायद हमारे लिए ओ दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सस्पिशन कि हम उसके ऊपर शक कर रहे हैं। जी When the person is writing and you have the information, but what is the basis of that information? If the person has already given you in writing that he is registered, now he says he is not registered, then that we do it to accept that declaration, which is comes later, because there are provisions to surrender the MS certificate also. या He might have crossed, he might not be, he may be willing not to get the benefits of MS, he can get cancellation. It is for him to give me information that I am registered or not. If he says I am not registered, then you need to accept it. But So that declaration should be proper. जे unnecessary sham पेपर ना हो, कोई मेल आ जाए प्रॉपर उसके, या कोई मतलब that it should be official document that you should be able to prove that you have received it from that person only. डेफिनेटली ओके सर, सर, राइट। थैंक यू जी। हेलो यस सर। हितेश जी, यस सर।
सर इसमें ऐड करूं सर, ये वाली प्रोविजन है ना जिसमें आपको ऑलरेडी पता है भी वो रजिस्टर्ड है, हाँ जी। तो बाद में वो कहे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मैंने अपना सरेंडर करना, पर मैंने सरेंडर नहीं करा। ठीक है जी। बट सर उसमें प्रॉब्लम क्या आनी है, अब जब ITR 5 और 6 में उसने नंबर वो फिल कर देना, क्योंकि अब ITR फॉर्म में you have to mention your registration number and the category. ओके। वो एक सिंपल डेक्लेरेशन ले लेने से हो सकता है उसके इनवॉइस पे प्रिंटेड हो नंबर। इट्स नॉट दैट सिंपल भी, ठीक है जी किसी ने लिख के दे दिया टू कंटिन्यू हिज बिजनेस भी, नहीं नहीं मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस अनलेस एंड अनटिल it is 100% confirmed that he has surrendered his certificate. Sir, if they have already mentioned in the invoice, then I think the declaration will not be considered if the same is mentioned in the invoice. It is the government is advising the micro and small enterprises to mention their registration number and their category on their invoices as well. With times to come, I think this will be made mandatory, just like GST number. Might be possible by the end of this year. Yes, sir. PAN-based search is there. Yes, sir. That is what I was talking about earlier, that by the end of the financial year, the government might come with the portal where we can search through PAN or through GST number, that under what category the enterprise is falling. Ma'am, I have one query. Yes, sir. In the invoice itself, if we write payment terms 45 days, is it enough or have a separate return agreement? No, sir. Invoice would be considered as a valid agreement if it is written, the payment terms are written on the invoice itself. But in any period beyond 45 days would not be considered. That is mentioned in section 50, as you rightly said, that is okay. If invoice itself, payment within 45 days, it's okay. No, sir, it is not nowhere written what kind of agreement we need to have, but an invoice is a valid agreement for purchase of goods or purchase of services. Then it is a valid agreement for payment terms as well. You put 45 days with payment within 45 days, it's okay. That is my query. Sorry, sir. Can you repeat? In the invoice itself, payment terms within 45 days, is it enough? Yes, sir. Yes, it is okay. It is enough, sir. It is enough. Okay, thank you very much. Okay. Pradeep ji, you have raised your hand. Kindly raise your query. Unmute yourself, Pradeep ji. Pradeep ji, unmute yourself first. You are not audible. Yes. Now, am I audible? Yes. Yeah, thank you. एक्चुअली मेरे एक सप्लायर हैं जो कि पहले मैन्युफैक्चरर थे, राइट। उन्होंने हमें पूरे साल गुड्स दिए और अब हमने उनको बोला कि यार आप मैन्युफैक्चरर हैं इसलिए हम फर्दर आपसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, अपना MSME में अपडेट करा के ट्रेडर का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि तो रियल टाइम बेसिस पे हाथ के हाथ अपडेट हो जाता है। और उन्होंने मेरे को एक अंडरटेकिंग भी दे दी, सर्टिफिकेट भी दे दिया कि भाई मैं ट्रेडर हूँ। तो मेरे जो पुराने जो इनवॉइसेज हैं जिनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, तो मैं उसको एज ए मैन्युफैक्चरर कंसीडर करके चलूँ या ट्रेडर के इनवॉइस कंसीडर करके चलूँ? Sir, I think हमें उनको till the time they were registered as a manufacturer, we have to consider them as a manufacturer. बट मैम एक प्रॉब्लम ये है कि MSME रजिस्ट्रेशन अपडेट जो है दैट इज अ रियल टाइम बेसिस, राइट। तो मैं हर इनवॉइस के साथ तो उससे MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता कि भाई तेरा इस इनवॉइस पे क्या स्टेटस था। मेरे को कहीं एक डेडलाइन तो लेनी पड़ेगी ना कि इस डेट से मैं देखूंगा या इस डेट तक मैं देखूंगा। बट सर अगर उन्होंने अपडेट कराया है तो इंफॉर्मेशन भी आपको उन्होंने दे विल सप्लाई यू विद दिस इंफॉर्मेशन दैट दे हैव अपडेटेड देयर स्टेटस। नहीं, उन्होंने मेरे को अपडेशन का वर्बली तो बता दिया, बट मेरे पास नथिंग इन रिटर्न। ठीक है, मैं पूरे साल में मान लीजिए उनसे 100 बार माल खरीदता हूँ, राइट। तो मैं हर इनवॉइस पे कैसे चेक करूंगा कि भाई वो उस स्टेज पे, उस इनवॉइस की स्टेज पे वेदर ही वाज अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर। मैडम ये ऐसा नहीं होना चाहिए 31 मार्च ईयर एंड पे अगर हमें कोई प्रूफ ऐसा दे दे, चाहे वो ईयर एंड पे सरेंडर कर दे, जैसे सर ने बोला कि चेंज कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर सम पेबल देखना है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर वो चाहे सरेंडर्ड है चाहे ट्रेडर है, विल नॉट दैट बी सफिशिएंट? Sir, it is nowhere mentioned. It is my personal view through reading and understanding of the act that we have to take whether they are a manufacturer or a trader, or the effective date of registration we have to take from the date itself. So if there is a change of status, in my case,
in case they were previously registered as a manufacturer, we have to consider their payments under section 40. बट मैम प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास पुराना कोई एमएसएमई सर्टिफिकेट तो उसका मैंने कभी लिया ही नहीं। मैंने तो आज लिया, आज अपन बात करते हैं 9th of Feb की, ठीक है। आज वो मेरे को कह रहा है जी मैं ट्रेडर हूँ, मैं आज की डेट में सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पुराने इनवॉइसेस का क्या करूँ? आज के बाद से या आज के जो इनवॉइसेस है वो तो मैं मान लूंगा, वो तो बट ऑब्वियस है कि ट्रेडर ही है। लेकिन मैं पुराने इनवॉइसेस में मेरे पास तो उसका स्टेटस ही नहीं था कि वो मैन्युफैक्चरर था या ट्रेडर था, व्हाट वाज। Then in case, और sir, if I don't have any information, then the only information to me is that he is a trader. सर वही। प्रदीप जी, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, उससे ये डेक्लेरेशन ले कि मैं चाहे बिल में मेंशन था लेकिन बिल पुराने प्रिंटर थे, मैं अदरवाइज ट्रेडर ही था शुरू से। मैंने आपको जो सर्टिफिकेट दिया वो राइट फ्रॉम 1423 से मेरा ये सर्टिफिकेट था। आई हैव गिवन यू इट टुडे, बट आई वाज ट्रेडर ओनली। बिल्स में जो मेंशन किया गया है दैट वाज ओनली प्रिंटर अर्लियर व्हिच वाज नॉट चेंज ड्यू टू सम इनएडवर्टेंट एरर। मतलब उसको आपने कवर करना पड़ेगा। सर बिल पे तो, सर बिल पे तो उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ ना। बिल पे तो सिर्फ वो लिख रहा है डील्स इन सो एंड सो आइटम, नथिंग, नाइदर इज मेंशनिंग मैन्युफैक्चरर नॉर इज मेंशनिंग ट्रेडर। इस पर अगर एमएसएमई नंबर नहीं है ना, तो फिर तो वैसे भी जो उससे डेक्लेरेशन दे रहा है या ट्रेडर सर्टिफिकेट दे रहा है वो आप एग्री कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, माय पर्सनल क्योंकि व्यू एक है। कोई कट ऑफ डेट तो सर मेरे को रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एमएसएमई में जो जी सेकेंडली आज 9th of Feb है, राइट। आज अगर वो देता है तो 31 मार्च तक तो आप निकल जाते हैं उसमें से। एज ऑन 31 मार्च का जो बेसिक सीरियस मैटर है वो खत्म हो जाएगा। जिसमें इंटरेस्ट वाला मैटर रहता वो इतना सा सीरियस ना हो, पहले भी था, पुराना ही 2006 से लॉ बना हुआ है। सो मेरी ओपिनियन मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मैं जो समझता हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि मेरे पास जिस कट ऑफ डेट पे सर्टिफिकेट आज आया 9 फरवरी पे, अगर वो मेरे को डिक्लेरेशन ही दे रहा है दैट ही इज अ ट्रेडर, तो मेरे को ये मान के चलना चाहिए कि पहले के जितने मेरे इनवॉइसेस हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू द ट्रेडर, नॉट अ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि मेरे पास कहीं कोई और जरिया नहीं है पुरानी डेटों का कोई सर्टिफिकेट लेने का, या उसमें मैं रोज हर इनवॉइस के साथ तो उसके एक डिक्लेरेशन नहीं लूंगा कि इनवॉइस के साथ ईवे बिल भी आ रहा है और डिक्लेरेशन भी आ रही है। नहीं सर, प्रदीप जी, ये आपका प्रेरोगेटिव था, ये 1423 से लॉ लग गया, आपने नहीं लिया, ये आपने लेना था, राइट। आज लिया आपने, आप जो कहें मैंने तो आज जैसे मैं आज से लागू करूंगा, मेरे ख्याल में दैट मे बी ओवर डूइंग। आई थिंक जो सुभाष जी आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूजर। Is the recording available for this session? Hello. Do you hear me? हेलो जी करो, क्लोज कर लें। हाँ जी सर, क्वेरी खत्म हो गई सर, कोई है नहीं क्वेरी चैट बॉक्स में। हेलो। बाकी प्रदीप जी की क्वेरी भी होगी डिस्कस। तो ठीक है सर, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट आर स्पेशल मेरी छोटी सी क्वेरी है, सॉरी मैं सी वरुण गुप्ता, मेरी छोटी सी क्वेरी है। जो आप कह रहे थे अनसिक्योर्ड लोन पे, क्या कर रहे, चला गया इसमें से? जस्ट अरे तू मिनट क्या कर वरुण जी, रहा मैं है भाई? सबको एक बार म्यूट करता हूँ, आप म्यूट कर लेना। हेलो 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 हाँ जी वरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी सर, मेरी छोटी सी क्वेरी है एक रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लोन। मैम कह रहे थे कि अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट, मैम ने एक्चुअली समझ लिया इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। हमारा क्वेश्चन है इंटरेस्ट मतलब ना अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट, उसका क्या स्टेटस है? मैडम काइंडली रिप्लाई टू दिस क्वेरी ऑफ वरुण गुप्ता जी। सर अगर मैं क्लॉज की एग्जैक्ट लैंग्वेज में जाऊं, आई विल जस्ट ओपन अप द क्लॉज। सर अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट गुड्स और सर्विसेज। यस, actionable claims are excluded from the good. hello. हाँ जी, हाँ जी। Sir, as sir has mentioned that it will not be falling under the goods or services in the definition of goods or services. तो बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन पे नहीं है, आपने कहा था इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट उस पे जो लगेगा वो। नहीं सर, डिलेड पेमेंट्स पे जो इंटरेस्ट है वो तो दैट वाज देयर इवन बिफोर दिस क्लॉज हैज बीन इंट्रोड्यूस, वो तो बहुत पहले से है। एंड दैट इज इफ इट इज नॉट पेड देन दैट इज डिसअलाउड एज पर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट। वो डिसअलाउंस तो पहले से ही है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन वो अभी इसमें फॉल नहीं करता बेसिकली।
तो उसके Yes. लिए कुछ नहीं करना, एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है बेसिकली। राइट सर। Ma'am, निजा सर का हाथ, निजा सर प्लीज हितेश जी, जो Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन है उसके लिए पहले 43B की लैंग्वेज देखो। मुझे लग रहा है उसमें एनी सम पेबल, उसमें ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है शायद। सर वो जब हम एमएसएमई में जाते हैं ना सर, वहां लिखा हुआ है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो ये अनसिक्योर्ड लोन वाली है दैट इज नॉट नीदर अ गुड्स नॉर अ सर्विस, यहाँ नहीं लिखा बट एमएसएमई में लिखा हुआ सर। hello sir, I have one small query. निजा सर आपने हाथ, यू यू हैव रेज्ड योर हैंड, काइंडली Hello. unmute yourself and raise your query. निजा सर। So I have one small query. Yes, sir. Ma'am, somebody is saying that MSME 43BH provision not applicable to apparel industry for manufacturing and wholesale retail garments. For manufacturing and To which industry, sir? Apparel industry. Apparel industry, okay. Yeah, I am from Tripur, especially garment industry. It is not applicable. They are saying, referring some code 43, 45, 46, I think. no, Some sir, code they are referring. only the codes 45, 46, and 47 are there, which are exempted from the ambit of section 43BH. There is in those codes the traders or manufacturer or of apparels are not mentioned. Not mentioned. No, sir. I mean to say manufacturer of traders, manufacturer of apparels are not mentioned. If they are traders, then they will be out of the ambit. If they are manufacturer, they will be considered. So that means Traders, okay, it is for not apparel very there is well no separate applicable. exemption. Pardon, sir? Sir, it means for apparels there is no separate exemption. Separate exemption. No Even separate for exemption. garment manufacturing. Yeah, there is no separate exemption. Manufacturing, it is applicable for only, not applicable for traders. Yes. Okay, thank you. Right. Thank you. सर अनीजा सर आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सर अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। Hello? नहीं सर। Okay. सर अनम्यूट कर लीजिए अनीजा सर, आपको मैंने वो भेज दिया आस्क। तेज जी करो। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਐਂਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡੇਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਇਟ। We cannot blindly rely on the certificate of the supplier. Sir, in that case, we need the registration number. Only yes, in that yes. case we can verify. In case we do not have any information regarding the registration number, then there is no option. Then we have to rely on the confirmation given from received from the supplier. ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾ ਕੇ we can check it. But that is not a full proof. That is a very wide term. It's very difficult to check there. Though facility is there. Finally, to my mind, definitely government will provide it the facility to check with the PAN or GST number. Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर अब कंक्लूड करते हैं इसको। आई रिक्वेस्ट सी अश्विनी कुमार जी टू प्लीज गिव हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हेलो, सी अश्विनी कुमार जी स्पेशली इनवाइटेड, प्लीज सर। Thank you. हेलो, Thank you, Hitesh ji. हेलो At the sir, I have a question. I just logged in late, so do we have a recording of this session available? Yes sir, definitely you will definitely sir. Where will I, sir, find the recording of this? Sir, you on my YouTube channel CA Hitesh on GST, you will find it. If you can, sir, just send me a link to it, please. Definitely sir, I will. Okay. So Yes sir, please. thank you Hitesh ji for giving me this opportunity. At the outset, I must compliment you for organizing these discussions. You have been organizing such webinars on various current topics. My commendation to you, because this is a real service to the profession. And I am just seeing that you have very senior members, and the best thing which I could find was that you have mix of members. We were listening to a member from Tirupur,
as we could make out from his accent also. And in the second minute, we could get a taste of Punjabi also when Aneja Saab was talking. So we were in Punjab. So this is the real real good thing which you have done, that you have tried to gather members from all parts of the country. And now I must compliment my colleague Jasmine. I think she has really done a commendable job. She has collated the entire provisions of the newly incorporated section and tried to explain in her humble way. And I'm sure the members at large would have been, I do not know whether there has been clarity of thought, or after all these discussions, there have been many more doubts. That will always remain a question mark. As far as the provisions are concerned, I do not know what is the intention of the government in bringing out this provision. In what way the MSMEs are going to be benefited, it is a big question mark. Only time will tell. In our daily practice, we are finding that the business community is coming, that some people are saying that why should we deal with MSMEs, and it is really practically, and otherwise also, MSMEs are not government undertakings. Why should the government interfere in the running of the business of two private individuals? This is a business transaction. Everybody is free, or should be free, to enter into any agreement, enter into any arrangement for running of one's business. As far as the earlier provisions were concerned, when the government came out with this section 43B, they started with sales tax, then they came out with the interest on financial institutions, then provident fund, bonus. They were all, although my view is that Income Tax Act should not be used as a tool to enforce the applicability of other acts, because all other acts have very stringent measures for their own enforceability. But still, if the government wanted, that has been the intention. Even the Honorable Supreme Court has upheld all those provisions. So, but that was only with respect to the government, various sections or various acts which the government wanted to enforce. But this is a provision which may be very hard hitting for the MSMEs also, and for the other manufacturers or trade, whatever we may say, who are large business houses. For running of their business, it may be very hard hitting. The intention is still not clear why this has been incorporated in such a manner. And because now I will just, in a lighter vein, I will say, the way the government is moving on by adding these provisions, tomorrow an idea may come to the government that if you are moving on the road in a vehicle and the traffic police imposes a challan on you for any infringement of the Road Safety Act or whatever we may say, the government may come with a provision that if you have been challaned, then your vehicle will not get depreciation and you will not be allowed the expenditure incurred on the running of the vehicle. I think if this idea goes to Nitin Gadkari Sahab, he may try to get it incorporated. So I feel this provision as such, I don't know how it will benefit the MSME, but anyhow, we have to honor the acts of the legislature passed by our legislature. So with all these comments, I think this is an area which will raise many more doubts. It will encourage a lot of litigation also, because at least in this first year, by the end of this year, maybe people will find it very difficult to make all these payments, because the payment cycle, if the payment cycle is reversed, then ultimately it may not affect many people. But as a professional, I may say here that yes, as a service provider, we should be benefited
we should all get ourselves registered as MSME so that our fees payment is at least obtained in time. Because many times we see our clients also don't make payment for long times. At least this provision will help us in getting our fees in time. That's with these words. Once again, thank you very much, Hitesh ji and Jasmine, for giving me this opportunity also, for sharing my views, and particularly Jasmine for enlightening us all with the relevant provisions of the. Thank you so much. Thank you so much for your kind words, sir. Thank you, sir. Thanks to you for sparing your valuable time and giving us your time as well as time of Jasmine ma'am. First call. And Hitesh ji, I can just give this offer. I have really appreciated this idea. On any topic, if you want to hold any such webinar, we have a lot of workforce. You can give us this opportunity. So, thank you very much. We will certainly try to help you. Thank you, sir. Thank you very much. That will be in the favor and the interest of all the members, sir. Once again, on behalf of all the members, I thank C. Ashwini Kumar ji for his wholeheartedly support and sparing his time and time of and Jasmine ma'am for sparing your time and electing all the members of a very hot and crucial topic of MSME. Thank you very much. And further, I thank all the members for attending this webinar. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. और फर्दर कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी कि इसको इनफॉर्मल वे में बाद में कंटिन्यू कर लें डिस्कशन के लिए। तो इनफॉर्मल वे में कंटिन्यू करना है वेबिनार, जैसे मैम ने वेबिनार कंप्लीट कर दिया, सारी क्वेरीज आंसर होगी। अगर किसी ने इनफॉर्मली कंटिन्यू करना है, वी कैन कंटिन्यू, नो इशू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हितेश जी, यस हितेश जी, हाँ जी, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ MSME ਦੇ ਥਰੂ, MSME ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗੁਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ MSME 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਅਲਾਊਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੀ ਵਰਨ ਗੁਪਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ, ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬੂਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ MSME ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਆੜਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਟ, बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ सेल करता हो। सर ऐसे कीजिए, आप ना थोड़ी गोयल साहब आप एक कन्वर्सेशन हिंदी में कीजिए, मेंबर चैट बॉक्स में डाल दें काइंडली, हिंदी और इंग्लिश। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। मतलब मेरी क्वेरी ऐसी थी भी जो ऐसे हमारे कच्चे आड़ती होते हैं या कमीशन एजेंट्स कहते हैं नॉर्मली, जो कि फार्मर से गुड्स पिक करके एज एजेंट सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को। उस केस में 2-3 साल से तो ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर दी है कि जो पेमेंट है, जो मेन फार्मर को पेमेंट जानी है उनके सीधी बैंक अकाउंट में जाती है, लेकिन जो कच्चा आड़ती है वो सारी की सारी सप्लाई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को करे, कुछ प्राइवेट पर्सन को भी करता है। उस केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पेमेंट फार्मर को डायरेक्टली करेगा, उसमें जो पेमेंट है वो मतलब उस कमीशन एजेंट को पहले आएगी, वो फिर फार्मर को देगा, या उसने फार्मर को दे दी लेकिन उसने जिसको गुड्स सेल करी है प्राइवेट पर्सन को,
उससे उसी ने पेमेंट लेनी है कच्चे आड़ती ने। अगर उसको पेमेंट नहीं मिल पाती तो कच्चे आड़ती की पेमेंट ही मरती है, डूबती है बेसिकली। अब जो कमीशन है दैट इज प्योरली सर्विसेज, बट जो वो गुड्स दे रहा है थर्ड पर्सन को, वो एज ए प्राइमरी सप्लायर के रूप में नहीं दे रहा, वो एज ए कंसाइनी दे रहा है या एजेंट दे रहा है। तो क्या उसकी जो पेमेंट जो उसने बायर से लेनी है वो एमएसएमई में कवर होगी? होने तो कमीशन चाहिए। एजेंट ने अपना जैसे आप कह रहे हो कि कमीशन। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि वो प्राइवेट प्लेयर्स आड़ती को पेमेंट करते हैं, फिर तो एमएसएमई में कवर हाँ, होगी। हाँ वही कह रहा हूँ ना, फिर तो वो कवर होएगी फिर। पेमेंट कवर होगी ना। पेमेंट एज ए प्रिंसिपल तो करनी, मतलब वो सप्लाई एज ए प्रिंसिपल नहीं कर रहा, सप्लाई तो एज ए वो एज ए एजेंट कर रहा है, हाँ हाँ, नहीं क्योंकि एजेंट उसकी खुद की तो है नहीं। वो फॉर्म अगेंस्ट ए फॉर्म के अगेंस्ट सप्लाई करते हैं ना, आई थिंक वो। जे फार्म कह लो बेसिकली। जे फॉर्म तो फार्मर को देते हैं ना, वो अपने पंसा हाँ जी, वगैरह आई आई फार्म हो गया, उसके लिए शायद आई आई फार्म आई होता है, देते हैं फार्म ना फिर। आई फार्म होता है मेरे ख्याल तो से। प्राइवेट प्लेयर को भी आई फॉर्म देते हैं वो। मेरे एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं फार्म कौन सा देते हैं, लेकिन अच्छा मेरे पास ठीक है, जनरल चलो। क्वेरी आ रही है ना, जो आड़ती है मेरे पास काफी है, वो कह रहे हैं हम जो प्राइवेट सप्लाई करते हैं उसके लिए एमएसएमई में हमारी सेफ्टी है कुछ के नहीं। होनी तो चाहिए। बट नॉट श्योर ना। बाकी तेज जी बताएंगे। सर मैं एक्सप्लेन करूं, मैं भी आरटीआई ही हूँ। हाँ जी लवी जी हाँ प्लीज जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। हाँ जी सर, इसमें ना होता है क्या है, हमने ना जो भी हमें फार्मर, हम बेसिकली होते क्या, मिडल मैन ही होते हैं हमने। हाँ मिडिल मैन। ठीक है, हमने तो या तो कणक या पैडी जो भी है वो बिकवाना है हमका। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल। क्या किया हुआ है कि हम तो आपको इतने ही रुपए देंगे, इसके मिनिमम सेलिंग प्राइस हाँ उसने फिक्स कर दी। अभी एग्जैक्टली। ये अभी होता क्या मार्केट में, अगर अभी खन्ना वाली साइड तो काफी हो रहा है, नॉर्मली प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट की पेमेंट से भी ज्यादा दे रहे हैं रेट। तो हम प्राइवेट ठीक है, प्लेयर्स को बेच देते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने गवर्नमेंट को ही बेचनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी होता क्या नॉर्मली, जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है वो तो सीधा किसान के खाते में ही जाते हैं। बिल्कुल लेकिन जब अगर हम किसी प्राइवेट को बेचते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स आरती के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल, उसमें आड़ती की ठीक है, एक ही मतलब हाँ, लेबिलिटी रहती है। उसमें एक तो हाँ जी, वो आरती के पास फसल के रुपए भी आ गए, उसका कमीशन भी आ गया। और बिल्कुल आरती करता है वो नेट अमाउंट आगे फार्मर को ट्रांसफर कर देता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक और इशू क्या आता है, कई बार होता गया कि अभी आरती ने तो फार्मर को देना ही देना है। हाँ देना ही देना, ठीक है एग्जैक्टली। पेमेंट, लेकिन कई बार हाँ क्या होता है सेलर आरती को पेमेंट नहीं करते, वो बोल देते हैं नहीं कि हम करते। आपको रुक कर देंगे। लेकिन आरती हाँ तो अपनी जेब से दे चुका है उसे। बिल्कुल, हाँ जी, ये चीज हो जाती जो है। आप कैरी करो सेम ही है। अब आड़ती को पैसे हाँ नहीं जी, मिल हाँ जी, रहे, जो हाँ जो जी, बायर है, क्या हाँ वो जी, हाँ जी सर। एमएसएमई एक्ट के अंदर उसको 15 दिन के बाद इंटरेस्ट देगा, या उसको डिसलाउंस होगा 43BH का? सर नहीं वैसे सर देखा ऐसे है जाए ना, तो ये 15 ये जो बायर आड़तिया परचेज है, एंड सेल ही होगी जो वे तो फिर ये। अगर हम आड़तिया के पॉइंट से, आप आड़तिया के पॉइंट से पूछ रहे हो ना। आड़ती पॉइंट व्यू से है भी। हाँ अगर आड़तिया के पॉइंट से ही बात डिस्कस करें तो ये सेक्शन तभी लगता है अगर मैंने कोई खर्चा क्लेम किया है। आड़तिया खर्चा ही नहीं क्लेम करता उसका। नहीं, सर आड़ती के पॉइंट हाँ, व्यू से ठीक है नहीं, वो मतलब आड़ती के पॉइंट व्यू से वैसे बात कर रहा हूँ मैं। आड़तिया नहीं, मैं प्राइवेट पार्टी हूँ मान लो। मैं प्राइवेट में प्राइवेट परचेज। पार्टी हूँ, हाँ जी, परचेज में खर्चा तो क्लेम कर ही रहा हूँ ना। प्राइवेट पार्टी कर रही है, मैं क्या आप आड़ती की बात करो, मैं आड़ती खर्चा तो क्लेम कर नहीं नहीं रहा नहीं ना। नहीं, मैं प्राइवेट पार्टी ही हूँ, प्राइवेट पार्टी हूँ, लेकिन अब मेरे पास एमएसएमई सर्टिफिकेट तो आया है आड़तीए का, हम्म। और मैंने पेमेंट भी लेकिन आरती को मेरी करनी है। एक्चुअल परचेज एग्रीकल्चरलिस्ट है। एक मिनट, आरटीए का तो आपको जो सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा सर्विस प्रोवाइडर का, बिल्कुल, मैं है ना। थर्ड पार्टी हूँ जिसने एक्चुअल हाँ बाय की है। हाँ, आपने थर्ड पार्टी ने आरटीए से परचेज करी, और परचेज जो हाँ आरटीए है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका उद्यम है सर्विस प्रोवाइडर का। बिल्कुल, तो और उस आपने पे क्या कवर है। आप, हाँ तो उसका सर्विस प्रोवाइडर कवर है, तो सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस वाली एक्टिविटी जो सिर्फ कमीशन है उतना कवर हो सकता है उस एंगल से। नहीं वो तो क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन अब जो पेमेंट बेसिकली है, हम्म। पेमेंट तो मेरे को इंटरेस्ट या डिसलाउंस नहीं होगी ना मेरी, अगर मैं लेट पेमेंट करता हूँ उसको तो। नहीं इसे बेसिकली अगर तो हम मैं इसको टेक्निकली परचेज तो सोच। कर ही रहा हूँ, बुक तो कर रहा हूँ, हाँ। मिडिल मैन के थ्रू कर रहा हूँ। हम्म लेकिन मेरे को एमएसएमई जो मेरे को मेरे साथ डायरेक्टली लिंक में तो आड़ती है, उसने एमएसएमई भी दे दिया। हम्म लेकिन मेरी मैं अपने अपनी परचेज में, परचेज चाहे मेरे को एजेंट या कंसाइनी की तरफ से आ रही है, हम्म गुड्स उसी तरह से ही हो रही है, लेकिन मैं एक्सपेंडिचर बुक कर रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी एमएसएमई का आ गया। हम्म। अब मैं उसमें जब मान लो मैं प्राइवेट पर्सन का मैं एज ऑडिटर ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी प्रोविजन 43BH में डिसलाउ करूं कि ना करूं?
तो आपका पेमेंट लेट है। लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा है परचेज करने का? आड़ती का है गुड्स का या किसी और का है? नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट तो आड़ती है का ही रहता है, बाकी अभी जो अर्थ का काम देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में बता देंगे। लीगल डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या रहता है, आई फॉर्म रहता है, क्या है प्राइवेट ये लवी सेलिंग भी के है केस में? बीच में जो सर बात कर रहे थे। हाँ जी सर। सर लीगल डॉक्यूमेंट ना आई फॉर्म रहता है सर। आरती आई फॉर्म इशू करेगा कि हमने इस बंदे को इतनी चीज सेल की है, इतनी क्वांटल जो भी कमोडिटी सेल की है, और वो कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो आई फॉर्म तो इशू हो गया, लेकिन वो कर रहा है एज ए एजेंट ही रहा है, क्योंकि उसकी हाँ जी हाँ खुद जी। की सेलिंग नहीं है, कर ऑन बिहाफ ही रहा है। नहीं चलो ऑन बिहाफ भी हो उसमें कोई इशू नहीं है। जब अगर आप पेमेंट लेट हम्म। कर रहे हो, चाहे आप एजेंट को लेट कर रहे हो चाहे मेन प्रिंसिपल को लेट कर रहे हो, लेट तो लेट ही है ना। हम्म। हाँ फिर तो हाँ, वही उस कर रहा एंगल, हूँ। हाँ फिर तो उस एंगल से एक सेकंड थॉट भी अगर कोई बाकी मेंबर बैठे हैं कोई देना चाहे दे सकता है। बट उसी जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से इमीडिएट लगता है कि लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गुड्स को तो एक्सक्लूड किया नहीं कि एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सक्लूडेड हैं। नहीं, वो तो परचेज ही है, हाँ हाँ, उसका वैसे तो बिजनेस इंक्लूड है किया उसमें तो। नहीं। हाँ जी हाँ। तो वही था बस, मतलब बेसिकली जब मैं ऑडिटर कहीं डिसक्लोज करूँ वो, यार हमने कौन सा उससे माल खरीदा है जिसके पास नहीं एमएसएमई है। उसमें फर्क नहीं है ना भाई, हाँ। किससे माल खरीदा है आपने माल तो एजेंट से खरीद लिया। जैसे जो कमीशन एजेंट है आड़ती है, उससे मेटल परचेज कर लिया, हम्म। उसने आपको नंबर भी दे दिया, उसका आपको जे फॉर्म भी आ गया, उसका उद्यम भी आ गया। तो जो हितेश जी सारे मैं इसमें डॉक्यूमेंट। हितेश जी मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हाँ जी हूँ। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मेरे अकॉर्डिंग देखो, इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, एक ट्रेडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स वी आर ट्रेडर्स, व्हेन वी आर चार्जिंग कमीशन वी आर सर्विस प्रोवाइडर। इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि इसमें कवर होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी। नहीं सर, अगर 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 दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर है, तो उसकी तो दोनों पेमेंट ही सिक्योर हो जाती है ना। नहीं अब ट्रेडर उसको कैसे? अलग अलग ट्रेडर ट्रेडर पार्ट, एक्सक्लूसिव, सर ट्रेडर पार्ट नहीं कवर एक्सक्लूसिवली होगा। ट्रेडर हो, नहीं एक्सक्लूसिवली ट्रेडर हो तब तो वो कवर ही नहीं है। जी अगर वो जी। मिक्स सप्लाई करता है तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कवर होता है, मेरे को ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अगर कोई मिक्स में डील करता है, ट्रेडिंग में भी डील करता है और मैन्युफैक्चरिंग में भी डील करता है, तो उसकी सारी पेमेंट सिक्योर है। मान लो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का सर एमएसएमई है, जी मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मेरी मैं कुछ चीजें ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, कुछ मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जो जी। बायर है उसको तो सारी पेमेंट ही देखनी पड़ेगी ना। अब मैं खुद प्रोक्योर करके मटेरियल भी सप्लाई कर रहा हूँ, है तो मैं मैन्युफैक्चरर, पर इसका मतलब ये तो है नहीं मैं गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जो बायर है उसने तो पूरी पेमेंट ही, उसको मिक्स के केस में पूरी की पूरी पेमेंट ही देखनी है, भी कौन सा बिल है उसकी पेमेंट टाइमली होगी कि नहीं। नहीं ये ये तो है मिक्स क्वेश्चनेबल के लेकिन केस में रहेगा। साहब मेरे, आपा इसका जैसे इन्होंने कहा हम बिल जिस मर्जी मेटल का आ गया, हमें नहीं पता सामने वाला उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है कि ट्रेड कर रहा है, और उसने हमें बिल्कुल उद्यम दे एग्जैक्टली। दिया मैन्युफैक्चरर का। हाँ, तो है तो मैन्युफैक्चर का ही देगा। हाँ हाँ। और जैसे और मैडम ने वैसे भी बताया जो, हाँ, कि 45 कॉमनली नंबर जो, 46 नंबर 47 हाँ, नंबर 3 में अगर आपके कोड में रजिस्टर्ड है फिर आपको एग्जम्पशन है, अदरवाइज नहीं एग्जम्पन। नहीं वो तो 45 46 47 तो ट्रेडर का हो गया ना। हाँ उद्यम का अगर वही कह रहा ट्रेडर हूँ। हाँ ट्रेडर का रजिस्टर करा वो स्पेसिफिक पर्पज से है, हाँ 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 वो जी। तो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है, एमएसएमई की डेफिनेशन में नहीं आता नहीं बेसिकली। आता, हाँ जी उसने बाहर प्योरली ट्रेडिंग का दे दिया तो वो वैसे ही एमएसएमई उसमें एक्टर बाहर हो लगता ही जाएगा। नहीं है। बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वो मिक्स डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है, तो फिर तो उसकी सारी जो भी सप्लाई है वो सारी एमएसएमई में कवर हो जाती है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है वो तो ये कह रहे हैं मिक्स सप्लाई के केस में फुल आपकी जो भी सप्लाई है वो सारी की सारी एमएसएमई में आएगी। हाँ सारी कवर हो जाएगी, वो तो ठीक है बात। हाँ। इसमें ये देखने वाली बात है, क्या हम ये प्ली ले सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है दैट प्रिंसिपल हम्म। इज नॉट कवर्ड अंडर एमएसएमई, एजेंट कवर्ड है तो हाँ, एजेंट यही को देखने वाली बात है ना, मैं हाँ एज ए बस। हाँ सर्टिफिकेट के टाइम पे करूंगा। ये बेसिकली बस। यही है, हाँ कैसे करूंगा मैं, क्लाइंट को कैसे कन्विंस कराऊंगा मैं इसको डिसअलाउ करने जा रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल। क्लाइंट को भी आप ऐसे नहीं कर सकते डिसअलाउ, वो भी आजकल सब कुछ देख के चलता है। सही बात है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट सा क्रिएट हुआ। चलिए चलो ये इसको थोड़ा सा पेंडिंग रख लेते हाँ हैं। सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसको पेंडिंग रख लेते हैं। कोई और पॉइंट हो? हाँ, सोनी साहब आप कुछ कह रहे एक थे डिस्कशन करने के लिए, कुछ रख लेना। है पॉइंट कोई था इशू? इसमें से थोड़ा सा, ये वो अभी डिस्कशन में ये आया, वो थोड़ा सा पहले से ही प्रोविजन आई हुई है भी हम्म। आरबीआई रेट के 3 टाइम्स उसका मंथली कंपाउंडिंग करनी है। हाँ जी। इसी सेक्शन से रेट करता है, जो इंटरेस्ट की प्रोविजन डालनी है वो भी हाँ हमने देखनी है बेसिकली। तो हाँ जी। 31 मार्च को इंटरेस्ट की प्रोविजन डलगी कि नहीं डलगी, हम्म। लेकिन वो अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है जी।
ठीक है, अगर मैं ऑडिट करूंगा तो मैं प्रोविजन डलवाऊंगा ही, मतलब अब मेरे को जब नॉलेज में है जो चीज तो मैं डलवाऊंगा। अगर किसी बंदे का ऑडिट नहीं है तो वो प्रोविजन नहीं डालता तो क्या कॉन्सिक्वेंसीज है? उसका खर्चा तो डिसलाउ होता, मतलब ऑलरेडी अलाउेबल नहीं है, वो अपनी बुक्स में प्रोविजन नहीं डालता 31 मार्च को या कभी भी नहीं नहीं, डालता, तो उसमें तो उसके आपका कॉन्सिक्वेंस। ऑडिट, उसमें तो जैसे ऑडिट केस में तो नहीं अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डलवाने नहीं, की। ऑडिट में तो बन गई। अगर एज ए कोई भी बंदा है, मतलब आप इनकम टैक्स पॉइंट व्यू सोचते हैं भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज तो कुछ नहीं है ना अगर वो नहीं डालता तो, मैंने अदर देखो देन ऑडिट केस। उसमें तो, हाँ उसमें तो सामने वाले बंदे डाल दिया, बट वो प्रोविजन ही नहीं कर रहे इंटरेस्ट की, तो इसमें व्हाट कैन वी एज ए प्रोफेशनल डू? नहीं नहीं, वो तो हम डलवाते हैं ना। मेरे पास अगर ऑडिट केस नहीं है, मेरे को टैक्सेशन ही है उसकी, तो भी मैं उसकी बुक्स में आईटीआर के टाइम पे उसको कंसल्टेंसी तो देता ही हूँ ना भी इसकी प्रोविजन डालो भैया, अगर नहीं डालोगे तो ये दिक्कत आएगी। हाँ तो फिर अभी इशू क्या है आपका, आप कह रहे तो हो ऑडिट दिक्कत नहीं? क्या आएगी ये नहीं समझ आया ना, उसमें कंसिक्वेंसेज क्या है? एक्सपेंडिचर तो डिसलाउ होता ही नहीं है, अगर डिसलाउड ही है एक्सपेंडिचर तो उसको मिलना ही नहीं है। अगर वो प्रोविजन नहीं डालता तो उसको कोई कंसिक्वेंसेज है, अभी उसको कोई दिक्कत आ सकती है अगर वो इंटरेस्ट की प्रोविजन नहीं डालता तो। वो एमएसएमई एक्ट के अंडर उसको कोई केस कर देता है फिर। नहीं, एमएसएमई एक्ट तो अलग चीज है ना, क्योंकि तो इनकम टैक्स ने प्रोविजन डाली है इनकम भाई टैक्स थ्री में कोई टाइम्स। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स में कोई नहीं है ना, तो वो प्रोविजन कोई डाले ना प्रॉब्लम। डाले हाँ जी। वो तो हमें एज एन ऑडिटर वो देखना पड़ेगा भी उसने ट्रस्ट की यस। प्रोविजन डाली कि नहीं डाली। हाँ यस यस। एज और एन अदरवाइज ऑडिटर आप अगर क्वालिफाई कर दो ऑडिट रिपोर्ट में, क्वालिफाई कर देंगे प्रोविजन तो दिख भी कोई जाएगी। दिक्कत नहीं है। अगर हाँ क्वालिफाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं उसको इनकम कौन सा टैक्स में। अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। यस यस यस। हाँ हाँ, तो तो मतलब इनकम इंटरेस्ट टैक्स वाला में कोई फैक्टर तो दिक्कत कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ना। हाँ, और इरेलीवेंट। अदरवाइज प्रोविजन भी बुक कर दी तो भी पेमेंट ना करी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट डिसलाउ एमएसएमई हो में जो जाना पर्सन बट रजिस्टर्ड फेयर हो है वो जाना। जब क्लेम करेगा तो बेसिक अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट क्लेम करेगा। कौन क्लेम करे? इनकम क्लेम करेगा ना वो। नहीं नहीं, एमएसएमई वाला बंदा जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, आपने पेमेंट लेट कर दी, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेट हो गई है ना, जब वो हाँ, अगर क्लेम करता है आपसे तो वो आपको बेसिक अमाउंट जो पेबल है प्लस इंटरेस्ट जो 3 टाइम्स वाली इंटरेस्ट की क्लॉज है। इनकम बुक करेगा ना वो एमएसएमई वाला बंदा, सप्लायर इनकम बुक करेगा ना अपनी। इनकम सप्लायर तो बुक यस। कर, इनकम तो रिसीव्ड बेसिस पे बुक कर सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कोई क्लेम करता है, केस होता है, तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी अमाउंट। यस। नहीं नहीं, वो तो चलो एमएसएमई एक्ट के अंडर होगी ना, हाँ इनकम जी टैक्स हाँ, के अंडर इनकम अब टैक्स में मैंने तो प्रोविजन सोल्यूशन डालनी बताएंगे है। कि नहीं इसमें नहीं है कुछ। इनकम टैक्स में कुछ नहीं 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 है। है। अब इनकम टैक्स में वो 3 टाइम्स की प्रोविजन मैंने तो डाली नहीं है एज ऐसी हाँ 31 मार्च को। लेकिन हाँ एमएसएमई वाले की तो ड्यू है एज पर इनकम टैक्स, वो तो इनकम उसको एज पर एक्रूवल बेस बुक करनी पड़ेगी। 31 मार्च को भी मेरे को 15 दिन या 45 दिन बाद पेमेंट करी है, तो मेरा इसका 3 टाइम्स आरबी रेट के हिसाब से मेरी तो इनकम बनती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वो रेवेन्यू उसको इनकम रिकॉग्नाइज करेगा सर्टेनिटी के ऊपर। रिकॉग्नाइज सर्टेन इफ एंटिटी रेवेन्यू सर्टेन। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी तो है नहीं अगर ना, मेरे उसने केस किया नहीं है ना कोई देता है। टर्म्स तो चलो उसको पता ही हम्म, है ना भाई। थ्योरेटिकल मत बात करिए, प्रैक्टिकली तो उसको समझ पता गया, ही है लेनी है या नहीं लेनी है। वो तो उसकी मैं ऑप्शन उसने समझ है ना गया। सर। केस करना है, लेनी है तो प्रोविजन बुक करके अपना टैक्स दे दे, हाँ, या वो केस फाइल करे फिर बुक करे केस वो। फाइल करे। उसके बाद भी वो केस डिसाइड होगा तभी बुक होगी, यस। तब तक तो वो कंटीजेंसी है। ठीक बात है। चलिए सर, एनी अदर और कोई किसी और की पॉइंट ऑफ क्वेरी हो तो डिस्कशन? पूछ सकता है ना, मैंने तो इसलिए कहा था कुछ मेंबर्स की क्वेरीज पेंडिंग थी ना, लेटर से हाँ इन्फॉर्म जी, में अगर किसी सुनी की है है पर जाना डिस्कस था। कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्लेटफॉर्म ओपन है सर। हाँ सर थोड़ा सा जल्दी हो गया था ना लास्ट में, सर अश्विनी सर को हाँ, थोड़ा तो सा था इसलिए भी कि इंक्लूड इसलिए करो। एक्सटेंड करवाया था। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तेज जी अच्छा हो गया हाँ जी क्वेश्चन सर। डिस्कस। हाँ जी टान साहब। सर ये एक इशू है इसमें कि कई बार लोग ना बिल के नीचे लिख देते हैं कि मेरी पेमेंट 10 दिन के बीच में करो, हाँ जी और हमारा कोई कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई म्यूचुअल नहीं हुआ है। हाँ जी। प्रैक्टिकली किया है कि उन अब जब हम देखेंगे वो 10 दिन को देखेंगे, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट प्रैक्टिकली वही हो गया ना, बिल उन्होंने सेंड बिल्कुल कर सर, दिया एग्रीमेंट हमें। वही है, 10 दिन की यस क्लॉज ही यस। चलेगी, 45 उसमें 10 दिन नहीं होगी फिर चलेगा। तो 45 वाली तो अपने अभी ओवर राइट होगी, तो हाँ रिटर्न 45 नहीं एग्रीमेंट तो वही चलेगा। बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 15 हमारे से तो भी कम देखो होगी वो तो। वो ज्यादा इशू आ गया, वो तो देखने और भी मुश्किल है उस टाइम पर। वो हाँ लोग 45 दिन लगा के बैठे हैं, वो तो खत्म हो गए। नहीं, सर वो बिल पे 15 भी ओवर नहीं रहे, राइटिंग ओवरऑल अलाउड है? वाले 15 भी नहीं रहे वो तो। सर बिल 15 भी पे नहीं रहे ओवर ना। राइटिंग अलाउड है? वो 10 से अगर काट के 45 कर लें? नहीं हाँ नहीं जी, साइन कर। वो नहीं। नहीं सर मतलब इनके कहने का मतलब बिल के ऊपर 10 को काट के 45 हाथ से लिख लो, वही कह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। नहीं वो वो तो नहीं हो है जाए। वो। नहीं। सर अगर वो साइन कर देगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं, वो तो फिर विद, एक तो हो गया साइन करके दे वो रहा तो है, एक हो लेटर गया। ले लो उससे। ये कहते हैं बायर थोड़ा कर लेगा, सेलर कर ले तो वो हाँ, तो अलाउड है ना सेलर करके सर। देगा साइन, फिर तो हो ही गया ना, डीम्ड हो फिर गया, तो फिर तो वो 48 हो एग्रीमेंट गया। वो अपने आप एग्रीमेंट बन जाएगा, म्यूचुअल हाँ एग्रीमेंट हो डेफिनेटली गया। डेफिनेटली। इनवॉइस इज डीम्ड एग्रीमेंट, सर इटसेल्फ वैसे इज तो एग्रीमेंट।
इसमें ये अब क्लियर है बेसिकली 44 जब केस लगे तब उसके बाद वहीं पे 45 करके उससे साइन करवा लो, पेमेंट तो उसकी रुकी भी होगी उसकी भी कभी भी ना, बंदा तो अपना ही है वो भी। केस लगे तो बंदा मिलते नहीं है, जब केस लगे होते हैं ना तो कहते हो पता नहीं कहाँ गया सप्लायर। वरुण जी केस के टाइम से पहले ना अपर है वरुण जी, मैं क्या आपका रिपोर्टिंग करनी है तो केस से पहले ही अपने को अब 3CD में रिपोर्ट करनी है, तो तभी हमें देखना पड़ेगा 45 वाली क्लॉज लगानी है, 10 वाली क्लॉज लगानी है। हाँ वो तो वो बेसिकली कल जो बात हुई है 15 मई तक ऑडिट करना पड़ेगा बेसिकली। हाँ जो मर्जी लगा लो, तो कहने का मतलब वो आप ये बड़ी प्रोविजन ना रखें केस वाली, अभी जो है 45 वाला करवा लो बेटर है, नहीं तो 10 दिन ही गिने जाएंगे जैसे टांडा साहब ने क्वेरी रेज करी है। सर एक वो एक इसमें भी चैट बॉक्स में भी एक क्वेरी आई हुई है कि 43B, जो 43B है वो भी नॉट विद स्टैंडिंग वो शुरू होता है, ये 44AD भी होता है। हालांकि 44AD ओवरराइड कर रहा है, बट जैसे कैश ट्रांजैक्शन वाला कि 10,000 से ऊपर वो भी 44AD पर एप्लीकेबल कर दिया है इन्होंने, शायद 40IA भी कर दिया है, तो ऐसे इसका तो नहीं कोई मतलब कहीं पर बट ये जाके 43B भी इसी लैंग्वेज से शुरू होता है, 44AD भी इसी लैंग्वेज से शुरू एडी होता वाला। है। तो वही पॉइंट रेज किया था इसमें। अब क्या है, अगर देखो आप जो एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग, अगर आप 44AD की रिटर्न भरते हो वहाँ पे बुक्स बैलेंस शीट पूरी डाल रहे हैं, क्रेडिटर्स डेटर सब कुछ डाल रहे हैं, तो हमें वो क्रेडिटर्स को भी अगर 45 डेज से बियॉन्ड है तो डिसअलाउ करने की प्रोविजन बनेगी, क्योंकि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि 44AD कवर नहीं करेंगे इसमें। तो क्योंकि 44AD में जब रिटर्न भरनी है, किसी ने 4S फॉर्म भरना है, तो उसमें चार चीजें तो जरूरी है ना, सन्डी डेटर, क्रेडिटर, कैश और बैंक, स्टॉक सॉरी, तो वो हम्म। इन्वेंट्री, तो वो चार चीजें डालेंगे, क्रेडिटर डेटर तो डालने पड़ेंगे हमें, हालांकि रिटर्न चले डेटर जाते डालोगे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आपको नहीं सर, अब ये सर देखो ना जी टांड साहब, अगर आप क्वांटिफाई करें, मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 1 करोड़ 50 1.5 करोड़ की मेरी टर्नओवर हाँ है ना, जी, और 50 लाख के क्रेडिटर्स खड़े हैं, ठीक है तो जी, थोड़ा क्वांटिफाई करके चलो, 4 महीने के क्रेडिटर्स खड़ गए मेरे, बिल्कुल विच इज जी। मोर देन 45 डेज। नहीं हम तो चलो पहले लीगल उसी पर, क्योंकि जब ज्यादा बंदे कहें कि ये 4480 पर एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें भी उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अपने क्लाइंट भी काफी सारे क्लाइंट 2 करोड़ हो गया, जिसकी कैश है वो 3 करोड़ तक 4480 में जा सकता है अब तो इस साल, 3 करोड़ तक 4480 हो गया। और नॉर्मली अब लोगों की कैश तो कम होनी शुरू हो गई है, वो गूगल पे से कारण वो दस कैश करोड़ हो कम हो गया, गए, वो 6% में जाने शुरू हो गए। 10 करोड़ रुपए अगर हो गया उसका। इसमें इफेक्ट ज्यादा रहेगा, वो कहेगा मैं 4480 में चला जाता हूँ। हम्म। अगर 45 डेज कुछ वाला देखने की जरूरत नहीं। हाँ वो कहेगा कि मैं इस झंझट में क्यों पढूं, मैं 4480 में चला जाता हूँ, 6% दे के चलो बाहर हो जाता हूँ, इसमें ज्यादा नुकसान है 45 डेज, मतलब किसी केस में ऐसा हो जाएगा मुन्नी साहब आपके क्या विचार है इसमें जी? तो हमें तो पहले रिटर्न प्रोविजन में मिल। जब आ गया, अब 5-6 में आ गया, फिर आपको तो सेल्फ करना ही पड़ेगा और ना सर फोर्टी 4 में फोर नहीं आया एडी सर, में। 4 में नहीं है, आया, 4 में नहीं आया फॉर्म सर। आईटीआर में आ गया ना। नहीं ITR 4 में नहीं आया। 5 और 6 में ही आया हाँ, है, थ्री 4 में फाइव नहीं आया। 5 नहीं एंड नहीं, 6 में आ गया, हाँ 3 5 6 में आ गया, 4 में नहीं आया। 4 में नहीं सिक्स आया। में 6 में तो पहले भी सर, हाँ कंपनी ROC हाँ, पे वो तो कवर जाती है होती रिटर्न, थी, उससे अभी पहले नहीं भी आया जाती तो है इसी ROC। एंगल से नहीं आया ना, इसका मतलब नहीं तो इसको मतलब कहने का नहीं फोर्टी लगेगा इसका मतलब। मतलब नहीं फोर्टी नहीं, फोर वो एडी में बाद ना में आ लगा के जाएगा चले। सर। अभी तक तो यही है, अभी नहीं लगेगा फिर। पर सर कई अनऑडिटेड के केस में ITR 3 फाइल होती है। हाँ, तो फिर जहाँ पे आईटीआर में आप मेंशन करोगे फिर वो कवर हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। सर 4480 के केस में भी कई बार ITR 3 फाइल हो जाती हाँ है। 3 फाइल हो जाती है जी। आप आपके पार्टनरशिप फर्म है, फिर आपके केस में अगर आप 44ADA में भी चले जाओ तो आपको ITR 3 फाइनल करनी पड़ जाती है। हाँ, अगर पड़ कोई जाती है। किसी में पार्टनर है, मतलब पार्टनर के हम्म। केस में तो सीधा ही ITR 3 जाती है, उसकी चाहे कोई इनकम है बिल्कुल। नहीं है तब भी ITR 3 जाएगी। कोई आईटीआर में जब मांग लिया है तो फिर तो देना ही पड़ेगा ना, फिर तो वहां डिसअलाउंस आ ही जाएगा। तो फिर सर इसका नहीं मतलब आप अकेले फॉर्म चेंज करके डिसअलाउंस नहीं बनाए, ये लगा के चले 44 AD में डिसअलाउंस है ही है, चाहे है 3 ही। है चाहे 5 चाहे या 3 4 है। पर वहां पे कोई है नहीं ना नहीं वो बात डिसअलाउंस ठीक है के। सर, ITR वो बात ठीक है, ITR 4 में कोई डिस्क्लोजर नहीं है। बट जब मैं 44 AD की ITR 3 भर रहा हूँ उसमें डिसअलाउ कर रहा हूँ, और सेम ITR 4 भर रहा हूँ उसमें आईटीआर अलाउ 4। कर रहा हूँ, ये ना कुछ वो बात बनेगी। सर नहीं, पर 44AD में भी तो क्लियर ही लिखा है ना, अभी 28 to 43 सेक्शन सारे डीम टू बी रजिस्टर्ड है। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि दोनों साइड इन्होंने लिख दिया, हाँ 44 AD में भी लिख हाँ, दिया, वो तो है ही है। 43B हाँ की स्टार्टिंग में भी लिख दिया। पर ITR 3 में इन्होंने वो दे दी, क्रेडिटर्स की डिटेल मांग ली, और ITR 3 में मेरी नहीं, पर फोर्टी उसमें फोर ये एडी पर सर वो तो हितेश सर पर स्पेसिफिक क्रेडिटर की डिटेल तो अलग चीज है, लेकिन सेक्शन 44AD हमने स्पेशली चूज करा है, वो कहता है भी सब कुछ आप छोड़ दो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन की बात आ गई। हम्म।
43 भी BH तो एक अलग सेक्शन हो गया ना वो तो जैसे 43 या 29 या 30 है उसमें कहीं नोट स्टैंडिंग लिख दो तो उसमें नोट स्टैंडिंग का मतलब ये थोड़ा भी कुछ प्रोविजन है 44 AD की वो लगेगी नहीं। तो वही तो डिस्कस करना है कि 44 AD वाले केस में ये लगनी चाहिए। ये इशू सर काफी मतलब वाइड यूज हो रहा है, कई वर्जन व्यूज आ रहे हैं। चलो 2 पॉइंट हो गए, एक तो कच्चे आरती वाला हो गया, ये हो गया जो सब्जेक्टिव डिस्कशन है। क्योंकि बेसिकली जब 44 AD वाला बंदा है वो प्रोजप्टिव तभी चूज करता है, वो डिटेल्ड में नहीं जाता, वो नोट स्टैंडिंग 28 to 43 छोड़ के ही वो स्कीम ऑप्ट करेगा, वो करेगा ही क्यों, और स्पेसिफिक सेक्शन है। गवर्नमेंट को FAQs निकालने चाहिए। सर ट्रेडर के केस में वो MSME में बात हुई थी, वो तो MSME में अगर कोई ट्रेडर है वो केस ही फाइल नहीं कर सकता, अपना केस भी फाइल नहीं कर सकता, वो सेपरेट नहीं टन साहब वो तो क्लियर लिख रखा है, उनको हाँ एक्सक्लूड नहीं कर वो दिया तो है। पर उसमें इशू ये है ना कि पहले ट्रेडर को MSME का मिलता नहीं था, वो तो बाद में दिया, उससे पहले लोगों ने कोई थोड़ी बहुत सर्विस दिखा के ना कि हम फ्रेट का काम करते हैं या कुछ करके MSME में सर्टिफिकेट ले दिए, तो अब वो कर तो ट्रेडिंग रहे हैं, या एक मशीन जैसे आयरन स्टील को कमोडिटी चेंज नहीं कर रहे, हालांकि वो आयरन स्टील वाले क्या क्या करते हैं जो डाई स्टील बेचते हैं या वो काट काट के पीस पीस में बेचते हैं, डाई स्टील काफी लेंथ हो गया या शीट्स हो गई हैवी वाली, वो कहते हैं हमारे पास तो मशीन है, हम कटिंग मशीन लगाते हैं, हालांकि कमोडिटी कोई चेंज नहीं हुई, HSN कोड भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बट वो अब मुश्किल ये है कि जितने यहाँ पर आयरन स्टील आप मंडी में हो वहां पे जो रिटेल में बेचते हैं वो सभी के पास मशीन तो होती है, कटिंग मशीन जो हैवी बेचते हैं, यहाँ पर जितने बैठे हैं गिल रोड पर या जहाँ पर भी मेन काम तो यही है, वो कटिंग करके गैस कटिंग से या मशीन से बेचते हैं, वो कहते हैं हम तो मैन्युफैक्चर में नंबर लिया उन्होंने कि मशीनरी दिखा के, कि वो आप तो नेचर ऑफ एक्टिविटी को छोड़ दो, अगर उसके उद्यम में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर दैट्स इट, आप नेचर को छोड़ दो वो क्या कर रहा है, तो वो मतलब हमें बेसिकली उसकी तरफ से फॉल्स डिक्लेरेशन होगी ना, या तो उसकी डिक्लेरेशन को चैलेंज करना पड़ेगा, अगर वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम उसकी परमिसेस नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते, वी हैव टू गो थ्रू डिक्लेरेशन ओनली ना। बस हेलो हेलो हाँ जी हितेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है साहब, ठीक ठाक है? हाँ जी सर, ये जो कच्चा आड़ती है उसको सर्विस सेक्टर में मानेंगे या ट्रेडिंग में? सर ये अभी ना कुछ देर पहले वो ट्रेन में डिस्कस हो चुका कच्चे आड़ती वाला कंसेप्ट, नहीं मैंने अभी ज्वाइन किया सर। तो ये ना थोड़ा सा कच्चे सब्जेक्टिव मैटर रहा, इसको पेंडिंग रख लिया कि कुछ डिस्कशन करके एक दो प्लेटफॉर्म पे फिर मतलब क्लियर करेंगे, अभी थोड़ा टाइम भी पड़ा है तो ये क्लियर हो नहीं अब पाया। सर्विस सेक्टर में भी आता है, उसका बिल जो है उसकी पेमेंट सारी राइस मिल में मतलब कि खड़ी होती है, बहुत पुरानी सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं वो समझ गई मैं, ठीक है बात आपकी, तो वो भी देखते हैं सर इसमें क्या, अभी सर फाइनल नहीं हो पाया, कई व्यूज लिए गए, फाइनल नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, मैं नोट कर लिया, बाद में इसको कहीं डिसाइड करके फिर एक आधा वेबिनार और कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे इसको जी। ओके जी ओके। हाँ जी हितेश हाँ जी सर जैसे एक दो सुजेशन यहाँ पर जो क्लाइंट्स को भी आ रहे हैं, कोई इधर से आ रही हैं, जैसे व्हाट्सएप से भी आ रही हैं, लोगों अदर प्रोफेशनल से भी आ रही हैं कहीं से, वो कहते हैं कि आपकी चाहे 1/4/2023 को ओपनिंग खड़ी थी 10 लाख मान लो या 12 लाख मान लो, ठीक है जी, इस बार आप बिल वाइज पेमेंट करने शुरू कर दो, मेरे हिसाब से तो फीफो मेथड ही लगेगा, कि अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट जैसे इस बार 12,223 रुपये का बिल आया, वो 12,223 की पेमेंट कर देता है, मैं तो इस साल की बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, या दूसरी उनको ऑप्शन आ रही कि आप दो अकाउंट बना दो कि ये पिछला अलग से इसको ऐसे खड़ा कर दो, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी? सर देखिए जिसमें राउंड फिगर पेमेंट आ रही है तो स्टेट है फिफो मेथड, दो अकाउंट भी बनाओगे तब भी गलत है, नहीं बिल वाइज पेमेंट करते हैं, अब इस साल वाले पिछले खड़े रहने तो अगर बिल वाइज पेमेंट है तो उसमें बेनिफिट दे सकते हैं, बेनिफिट आउट अगर देना हो कि भैया हमारी ओपनिंग खड़ी है दैट इज ड्यू टू सम अदर रीजंस, बट अदरवाइज हमारी बात वाली पेमेंट जैसे हमने कहा 12,223 का बिल है, 12,223 का बिल आया, 12,223 का चेक चला गया, तो उसमें हम बेनिफिट मेरे हिसाब से माई ओपिनियन ले सकते हैं, या फिर आपस में म्यूचुअल कर नहीं लें। म्यूचुअल कुछ नहीं जी, अदर फिफो नहीं मेथड नहीं ऐसा वहां पर पिछले साल ओपनिंग का कि ये हमारा ऐसे आउटस्टैंडिंग खड़ा है, आप इसको मतलब हम इस बार की बिल वाइज पेमेंट करें, ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लें, हाँ लोगों मैं की वही बहुत कह रहा हूँ ना, पेमेंट, अगर बिल लोगों वाइज की पेमेंट बहुत कर रहे हो पेमेंट फिर खड़ी तो है एग्रीमेंट आपकी बना लो, तरफ से, बट अगर राउंड ऑफ पेमेंट कर रहे हो फिर एग्रीमेंट भी डील आगे नहीं की कर बिल पाएगा। वाइज आगे बिल वाइज पेमेंट कर दें हाँ जी इस साल वाली,
हाँ जी, उसको हाँ। धीरे धीरे खत्म करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये हो सकती है वो पॉसिबिलिटी, वो पर तो ये अगर आपकी पूरी की पूरी बिल की पेमेंट हो रही है बिल वाइज, फिर तो आप उसको बेनिफिट ले ही सकते हो। बेनिफिट ले हाँ जी, हाँ। तो बट जैसे आप एक कह रहे हो और 2 अकाउंट बना के उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हितेश जी, 2 का। यस सर। सर कल एक टैक्स ग्रुप है अपने एक एक्सपर्ट का ओपिनियन आया था, उसमें ऐसा बताया था कि रॉ मटेरियल का जो परचेज है दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर। अच्छा जी। इज इट करेक्ट और नॉट? नहीं सर, देन व्हाट इज दैट? बट फॉर 43 BH के लिए नहीं नहीं सर, इफ रॉ मटेरियल की परचेज इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज दैट? वो मैंने आपको ये ग्रुप में लिंक जो शेयर किया है वो एक्सपर्ट किसी चार्टर्ड ने शेयर किया था टैक्स ग्रुप पे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल की परचेज एक्सपेंडिचर नहीं है तो क्या है मेरी? वो रॉ मटेरियल की परचेज क्या है? अगर खर्चा नहीं है तो क्या है मेरा वो? देखो, खर्चा है तभी सर आप उसको एज एन एक्सपेंडिचर बुक करते हैं डेबिट साइड। नहीं, हितेश जी उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने परचेज तो बुक कर ली, हाँ जी। लेकिन मैंने उसकी सेल नहीं करी। मेरी इन्वेंट्री बढ़ी है, नहीं जब सर, तक वो मेरे तो पास साहब इन्वेंट्री। आपके पास ठीक है, स्टॉक पड़ा है, बट वो हाँ नहीं, मैं वैसे जो हाँ, ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं वो बात। मैं इसको, मैं उसको वैसे नहीं ले रहा। मैं भी परचेज को एक्सपेंडिचर ही मानता हूँ। हाँ मैं हाँ हाँ। जो अदरवाइज जो चल रही है बात, उसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये कह रहे हैं, कहते एक्सपेंडिचर तो तब बुक करूंगा ना जब मेरा कंज्यूम होगा मटेरियल। जब तक मेरे पास मैंने परचेज करा उधर मैंने स्टॉक ले लिया, तो मेरा सर एक्सपेंडिचर बुक ही नहीं उसमें हुआ। ना, उसमें आप देखो, आपका खुद ही बहुत उलझ जाएंगे कैलकुलेशन करने में कि विच स्टॉक, विच आइटम आर लाइंग इन माय स्टॉक एंड विच आर नॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हाँ चलो, तो उलझने फिर वाली बात सर तो वो अलग है, पर जो ला है वो ला है। जो अगर ला हमें कहीं का उलझना है तो उलझना ही पड़ेगा। नहीं, बट नहीं लॉ सर यही वो ना कह रहा है कि स्टॉक वाली छोड़ दो। और सर एक चीज जो आपने बताई थी कि जो इनवॉइस इज बेस्ड एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट में तो बहुत पार्टी साइन होती है, इनवॉइस में तो सिंगल पार्टी साइन होती है। अगर पेमेंट का टेन्योर है, जाना क्रेडिट कहीं। मेंशन है इनवॉइस में, यस लेकिन इनवॉइस तो सिंगल पार्टी साइन करती है। सर, देखो सेलर ने आपको इनवॉइस रेज कर दिया विद हिज सिग्नेचर, है ना? आपने उसको, आप एक्नॉलेजमेंट देते हो ना कि मेटल मैंने रिसीव कर लिया अंडर योर इनवॉइस। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट फॉर करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत पेमेंट करते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं जीएसटी का, तो वो एक्सेप्टेंस ही है सारा कुछ सर। और हम नॉर्मली जो लोकल को मेटेरियल को छोड़ देंगे, बाहर से कोई मेटेरियल आता है उसकी बिलिटी के ऊपर एक्सेप्टेंस देते हैं कि वी हैव रिसीव्ड सच एंड सच मटेरियल। ओके, तो वो रिसीट, जो रिसीट दी है, दैट इज डीम्ड एक्सेप्टेंस। डीम्ड है सर। हाँ जी, हाँ। ओके। एनी अदर क्वेरी सर? नहीं तो करें वाइंड अप इसको। हाँ जी सर, ठीक है सोनी साहब, फिर ठीक है सर। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय। ओके जी, थैंक ओके यू जी, सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया वेबिनार रहा, बहुत बढ़िया, काफी डिस्कशन हुई, हेल्दी डिस्कशन। हाँ जी, हाँ मतलब मजा आया। बिल्कुल। आप ठीक है इनवाइट करते रहे हमें ऐसे। सर। नहीं, थैंक यू सो बाय मच। द मेंबर, फॉर द मेंबर सर। बिल्कुल। Informal ओके, discussion is more fruitful. यूजफुल। हेल्दी। ठीक है सर, यस। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके Okay. सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, थैंक यू।